sake of you, my King, I'm giving you my dreams. I'm laying down my rights. I'm giving up my pride for the promise of new life. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. I'm singing you this song, waiting at the cross, and all the world owes you. I count it all as lost for the sake of knowing you, the glory of your name, to know the lasting joy in sharing in your pain. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. Oh, I surrender all to you, all to you. Lord, help us to surrender. Every area of our life. Show us, Lord, where we need to surrender. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. I put these three things together because I want to show you how these three things work together. इन तीनों को एक साथ रखकर मैं बताना चाहता हूं कि कैसे ये तीनों एक साथ काम करती हैं। The laws of diligence, obedience, and faith work together to produce blessings. सच्चे रूप से जीना, आज्ञाकारी रूप से जीना और विश्वास में जीना कैसे तुम्हें जो है वृद्धि की ओर ले जाएगी। Let me just read a few verses to you regarding this. कुछ वचनों को मैं इसके बारे में पढ़ना चाहता हूं। Proverbs chapter 10. नीति वचन 10वां अध्याय, Proverbs chapter 10 verse 4. नीति वचन 10वां अध्याय 4था वचन। Lazy hands make a man poor, but diligent hands bring wealth. जो काम में ढिलाई करता है वो निर्धन होता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। Very simple but very profound. बिल्कुल साधारण रूप से बहुत गहरा है। Talking about diligence. कामकाजी व्यक्ति के बारे में कहा गया है। Diligence in our work habits. हमारे आदतों में कामकाजी। You see, some people think just because we are Christians we'll be blessed. कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ ईसाई लोग ही जो है आशीष पाकर No, रहेंगे। lazy Christians can't be blessed. नहीं, बहुत ही आलसी ईसाई धनी नहीं बन सकते। Christians that sit around and just do nothing can't be blessed. ऐसे ईसाई जो बैठकर अपने समय बिताते रहे तो वो धनी नहीं बन पाएंगे। Lazy hands make a man poor. That's a sure way to become poor tomorrow. जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन बनता है, गरीब बना रहता है।
If you become poor, don't blame God. अगर तुम निर्धन होते हो तो परमेश्वर पे इल्जाम मत लगाइए। Because some people have become poor and then they blame God saying, well, I am poor, Jesus is poor, Paul is poor, Peter is poor, everybody is poor, so we're all poor. We belong to the same group. You know? कुछ लोग गरीब में रहकर कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, पौलुस गरीब था, पतरस गरीब था, यीशु खुद गरीब था, यीशु के सारे चेले गरीब थे, इसलिए मैं भी गरीबी में रह रहा हूँ। At Christmas time, we have to be very careful because this is the time this false propaganda about Jesus being poor is very क्रिसमस के समय में जो है ये बात ज्यादा प्रचलित हो जाती है क्योंकि तभी जो है बहुत सारे लोग कहते हैं कि यीशु की तरह हम भी गरीब रहेंगे। They found this thing about Jesus being poor. मुझे नहीं मालूम कहाँ से इन्होंने खोजा कि यीशु भी गरीब था। The maker of heaven and earth, वह आकाश और पृथ्वी का करता the है, one who fed the 5,000, जिसने 5,000 लोगों को the भोजन man दिया। who had 12 disciples leave their professions, come and follow him, is not ऐसे poor. व्यक्ति को जिसने अपने चेलों को बनाकर अपने धंधों को छोड़कर इसके पीछे हो लिए, वो When गरीब they नहीं हो सकता। crucified him, they took his garment and they wanted to cast lots on it to see who will get it. जब वह सूली पर मारा गया तो उसके कपड़ों को लेकर चिट्ठियां डाली कि उसके वस्त्र को कौन ले। I don't think if we took our shirts off, anybody's going to auction it and compete to get it. मुझे नहीं लगता कि अगर हम अपने शर्ट को उतार कर रखें तो कोई इस पे चिड़ी They डालकर will कोई take लेगा। it and throw it in the garbage. उसे लेकर जो है कूड़े में फेंक देंगे आजकल के लोग। Going to stink and nobody wants to put it on. बहुत ही बुरा बदबू मारेगा, कोई उसे लेना भी नहीं चाहेगा। Besides that, if they give 500-600 rupees, they can go and buy it anyway. और उसे उसके बजाय जो है 500-600 लेकर जो Why खरीद did लेंगे। they auction it? Why did they cast lots on it? क्यों जो है उसके पैसों का Because नीलाम it was लगाया गया? of a very high quality. क्योंकि वो बहुत हाई क्वालिटी का था। You know, people have said a lot of things. Foxes have holes, birds have nests, son of man has nowhere to lay बहुत his सारे लोग head. बहुत कुछ कह सकते हैं, लोमड़ियों के लिए खड्डे हैं, पक्षियों के लिए घोंसले हैं, पर परमेश्वर के पुत्र के लिए अपने सिर रखने के लिए Don't believe जगह नहीं these है। lies. इन झूठों में भरोसा मत कीजिए। Don't believe that Jesus was a person living on the sidewalks and the platforms of the ये city. कभी मत भरोसा कीजिए, झूठों में भरोसा मत कीजिए कि यीशु जो है प्लेटफॉर्म में गलियों में रह That's रहा। wrong. वो गलत बात है। Jesus said to some people, you come and see. They asked him, where do you live? He said, come and see. यीशु ने कुछ लोगों से कहा कि वो कहाँ रहता है, आकर देखो। When they went, he said, stay. Tomorrow you can वो go. जब वो आए तो उन्होंने कहा यहीं रहो, कल जा सकते हो। Most of you would not invite anybody to your house because you don't have an extra room. आप में से बहुत सारे लोग किसी और को घर में नहीं रख सकते क्योंकि एक्स्ट्रा रूम नहीं है घर में। And besides that, you don't want to be embarrassed by inviting anybody. You don't think your house is good enough. इसके अलावा तुम ये भी सोचो कि तुम्हारा घर उतना अच्छा नहीं है, किसी को तुम अपने घर में बुलाओगे भी But नहीं। Jesus had a good enough place to invite people. पर यीशु के पास अच्छा जगह था कि लोगों को वहां बुलाए। Yet this Christmas season, we got to be very careful because the only person who can help the poor is made poor. क्रिसमस के दिनों में हमें बहुत ध्यान से होना चाहिए, जो आदमी निर्धन है, जो गरीब है, वही जो दूसरों को गरीबी में रखेगा। They make it so that they can't get any help. उसको भी गरीब बनाकर जो है उसे सभी सहायता He को इनकार didn't करते come हैं। in this earth to live as poor. वह इस दुनिया में एक गरीबी की जिंदगी जीने के लिए नहीं He आया। came to redeem the poor from the curse of poverty. वह गरीबों को इस गरीबी की शाप से हटाने के लिए यहाँ पर आया। He didn't come to be poor so that he can be one with us. वह इस दुनिया में है गरीबी का हाल लेकर हमें गरीब में रखने के लिए There नहीं will be आया। just one more poor man. वह इसलिए नहीं कि एक और गरीब आदमी बने, One more problem. एक और समस्या। We got enough of that. बहुत सारे हैं पहले से ही। He came to eradicate the curse of poverty and bring the blessing of वह God. गरीबी नामक शाप को इस दुनिया से हटाकर हमें वहां से छुटकारा करने के लिए आया। Amen. आमीन। So God doesn't want anybody to be तो poor. परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई यहाँ पर गरीबी में रहे। But lazy hand is what makes a man poor. देखिए, ढिलाई से काम करने वाला ही जो है निर्धन बनकर रहता है। But diligent hands make a man wealthy, the Bible says. पर कामकाजी व्यक्ति जो है धनी बनता है, बाइबल कहता है। A lot of people think that wealth is not mentioned in the बहुत Bible. सारे लोग कहते हैं कि संपत्ति जो बाइबल में नहीं Like I बताई। said, people have no problem with wealth. They want it. लोगों के पास कोई समस्या नहीं है संपत्ति को लेकर, वे उसे चाहते हैं। They don't want it in the church. That's all. वे कलीसिया में नहीं चाहते। बस Sunday morning diet, they don't want to include रविवार wealth. सुबह डाइट में जो है वे Don't संपत्ति को नहीं preach चाहते। about wealth. संपत्ति के बारे में प्रचार मत करो। Don't tell us about that. कभी हमें उसके बारे में When we बात come करो। to church, tell us about the 7 heavens. जब हम कलीसिया में आते हैं तो 7 आसमान के बारे में बात Tell करो। us about the angels, tell us about the devil, tell us about God, tell us about, hell and all of that. स्वर्ग के बारे में बात करो, आसमान के बारे में बात करो, स्वर्गदूतों के बारे में बात करो, नरक के बारे में बात करो। Don't tell us about this. इसके बारे में कभी बात मत करो।
But what to do? The Bible tells us about पर this. क्या करें, बाइबल इसके बारे में बताता है। Amen. आमीन। The Bible says, lazy hands make a man poor. बाइबल कहता है कि जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन बनता है, The diligent hands make a man wealthy. परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों से धन It's a कमाते very हैं। simple principle. साधारण सा सिद्धांत है यहाँ पर, But it will work. पर वो जरूर काम करेगा। When you're careful enough to use your hands and work and be good at your work, you cannot but get better than what अपने you are हाथों today. से काम करके जब तुम कामकाजी बनते हो तो कुछ और नहीं बल्कि और बेहतर बनते हो A lot और of श्रेष्ठ people, बनते हो। are upset with God. Why did God bless him? Why didn't he bless बहुत me? सारे लोग जो इसको लेकर अपसेट होते हैं कि क्यों परमेश्वर उसे आशीष दी, मुझे क्यों आशीष नहीं दी, Why? क्यों? He's got the same education as me. जैसे मैंने पढ़ा वैसे ही वह पढ़ा Sometimes है, he's got lesser education. कभी कभी मुझसे कम पढ़ा है वह, Why has he blessed him more than me? क्यों उसे मुझसे ज्यादा आशीष So मिला है? Christians have an answer for that. For some people, God has more to give. Some people, he just ईसाई लोगों के gives पास less. अच्छा उत्तर है, कहते हैं कभी कभी कुछ लोगों को अच्छा आशीष देते हैं, कभी कभी लोग कुछ लोगों को कम आशीष The देता Bible है। doesn't say that. Bible says, according to your faith, it shall be. बाइबल ऐसा नहीं कहता, बाइबल कहता है कि तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो, You follow certain principles, and that's going to work for you. कुछ सिद्धांतों को तुम पालन करोगे तो वही तुम्हारे लिए काम करेगा। That's how the Bible talks about it. ऐसा ही बाइबल बताता है। But a lot of people are upset at why God hasn't blessed पर them. बहुत सारे लोग इससे अपसेट हो जाते हैं कि क्यों परमेश्वर मुझे आशीष नहीं They दी। blame God. वे परमेश्वर पे इल्जाम They लगाते blame हैं, everybody वे सब पर इल्जाम लगाते हैं for their state and condition, financially and materially. अपनी स्थिति के अनुसार जो है आर्थिक रूप से और चीजों के आधार पर कहते हैं, But they don't find any fault with them. पर उनमें कोई गलती नहीं देखते। What they're saying is, I have nothing wrong. Everybody's got, that man is bad, this woman is bad, and this boss is bad, that company is bad, and God is bad. That's why I'm like this. वे क्या कहते हैं कि वो ठीक आदमी नहीं है, वो बॉस ठीक नहीं है, वो मैडम ठीक नहीं है, वो कंपनी ठीक नहीं है, वो बॉस ठीक नहीं है, सब के सब ऐसे ही हैं, That's why I'm like this. इसीलिए मैं ऐसा हूँ। But the Bible says, have a checkup. पर बाइबल कहता है कि एक चेकअप कर लो, Check yourself out, see what you can do better. There are laws of increase whereby you may increase. अपने आप को चेकअप कर लो, अच्छी व्यवस्थाएं हैं जिससे और तुम बेहतर हो सकते हो, जिसके द्वारा तुम और वृद्धि पा सकते हो। Maybe some of us never thought there are certain laws that we can use to come up in अब life. ऐसे कभी किसी ने सोचा नहीं है कि कुछ और अच्छी व्यवस्थाएं जिसको लेकर जिंदगी में और We ऊपर आ never सकते looked हैं। at the Bible in that way. कभी बाइबल को उस रीति से हमने नहीं देखा But है। the Bible is a wonderful book. It's God's divine counsel given to बाइबल जो man. एक अद्भुत सा पुस्तक है, ये मनुष्य के लिए जो है उसकी सहायता के लिए, अच्छी आलोचना के लिए दी Wherever गई the है। Bible has gone and has been preached, in whichever countries the Bible has had preeminence, there has been prosperity economically. जिस देश में जो बाइबल गया है, जहां जहां इसको लेकर प्रचार किया गया है, वहां वहां जो है सफलता और समृद्धि बहने लगी है। You just look at history and look at the countries of the world. इतिहास को देखिए और संसार के देशों को भी Wherever देखिए। Bible has been preached, there has been economic prosperity. जहां जहां बाइबल प्रचार किया गया है, वहां पर आर्थिक बढ़ोतरी हुई है, Because this thing has been preached as part of the Bible. क्योंकि ये बातें जो बाइबल के एक भाग के रूप में प्रचार किए गए हैं। So the Bible very clearly says there are certain laws of prosperity which we follow, we can be prosperous. बाइबल बिल्कुल साफ साफ बताता है कि कुछ ऐसे सिद्धांत या व्यवस्थाएं हैं जिनका हम पालन करेंगे तो वृद्धि हम Now पा सकते look हैं। at chapter 13 of the book of Proverbs. नीति वचन 13वें अध्याय को जरा मोड़ And लीजिए। let me read to you verse 4. चौथा वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। The sluggard craves and gets nothing, but the desires of the diligent are fully satisfied. आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं। Very clear. बिल्कुल साफ साफ है। Once again, the sluggard craves. He wants, but he gets nothing. आलसी व्यक्ति जो है लालसा करता है पर कुछ नहीं मिलता। Everybody wants. सभी चाहते हैं, Everybody wants more money, more this, better house, better everything. सभी जो है अच्छा चाहते हैं, ज्यादा पैसा चाहते हैं, अच्छा घर चाहते हैं, अच्छे पैसे चाहते हैं, धन चाहते हैं, But the desires of the diligent are fully satisfied. परंतु कामकाजी हष्ट-पुष्ट हो जाते हैं। Read another verse because I want to say a few things about what it means to be diligent. कामकाजी का मतलब क्या है, उसके बारे में कुछ और बात बताना चाहता हूँ। Chapter 14, verse 23. 14वां अध्याय 23वां वचन। All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने वाले से केवल घटी होती Simply it है। is saying that be careful not to be lazy, not to be a sluggard, not to be lackadaisical about the way you do your work and carry out your profession. Be good at it, then you will have everything साधारण good. शब्दों में बताया गया तो कभी आलसी मत रहो, कभी जो है अपने आप को
बेवकूफ की तरह मत रहो, बल्कि आपने जो कुछ भी काम करते हो ध्यान लगाकर रहो, सदा उसमें लाभ पाते रहो। Anyone that's going to be careful in the way they work and how they do their work is going to come up in देखिए, life. साधारण सी बात यह है कि जैसे वो काम करते हैं उसको ठीक रीति से करें तो अपने आप जिंदगी में ऊपर आ जाएंगे। Chapter 22, verse 29. 22वां अध्याय 29वां वचन। Do you see a man skilled in his work? He will serve before kings. He will not serve before obscure men. यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के See, सम्मुख नहीं। if a man is skilled, if he is good at his work, देखिए, अगर वो अपने काम काज में निपुण हो, he will serve before kings. वह राजाओं के समान खड़ा होगा, And he will not serve before obscure men. वह छोटे मोटे लोगों के सम्मुख नहीं Now, the होगा। Bible is very clear how we can really come up. बाइबल बिल्कुल साफ साफ बताता है कि कैसे हम ऊपर आ सकते हैं। It says, go get some skills. वो कहता है कि जाकर कुछ निपुण हो जाओ, Increase your skills. अपने निपुण को और बढ़ाओ, Cultivate yourself. अपने आप को और कल्टीवेट करो, Cultivate your knowledge. अपने बुद्धि को और बढ़ाओ, Cultivate your abilities. अपने क्षमताओं को और बढ़ाओ। God has given you certain abilities and gifts, and what are you doing about it? परमेश्वर तुम्हें कुछ वर दिए हैं, क्षमताएं दी हैं, तुम उसे लेकर क्या कर रहे हो? Sharpen your skills, because when you sharpen your skills, you are able to do your work much easily. अपने क्षमताओं को और तीखे बनाओ, इसको करने से और वृद्धि तुम पाओगे और आशीष Turn पाओगे। with me to Ecclesiastes. मेरे साथ Ecclesiastes. बोल लीजिए शुभोपदेशक, Ecclesiastes chapter 10 शुभोपदेशक 10वां अध्याय and verse 10. और 10वां वचन। If the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed, but skill will bring यदि success. कुल्हाड़ा तोथा हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होता More है। strength is needed, but skill will bring परंतु success. सफल होने के लिए बहुत If the बुद्धि axe से, is dull and its edge unsharpened, more strength is needed, but skill will bring यदि success. कुल्हाड़ा तोथा हो और परंतु उसकी धार को पैनी न करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा। One translation, NIV, says that. NIV ऐसा बताता है। It's nothing wrong in saying wisdom is important. यहाँ पर ऐसा कहने में कोई गलती नहीं, यहाँ पर ज्ञान बहुत Because जरूरी है, that means the same thing. वही उसका अर्थ है। Wisdom means a sharpening of skills. ज्ञान का मतलब है और तीखा करना। So it's not enough to work, but sharpen your skills before you work. तो It काम says. करना काफी नहीं है, बल्कि काम करने से पहले तुम्हारी क्षमताओं को A और lot of तीखा people are करो। out there with an axe that is dull and chopping it away from morning. देखिए, जो कुल्हाड़ा तोता है और सुबह से शाम तक उसे काम करो तो क्या फायदा होगा? They get up in the morning, don't think about it. Every day morning, they just get up and going. 6 o'clock in the morning, they're going सुबह chopping. खड़े हुए उठते हैं 6 बजे सुबह से लेकर जो है अपना कुल्हाड़ा लेकर लगातार काटते रहते हैं, पर वो कुल्हाड़ा तोता They है। sweat and they say, my sweat should bring something. वे पसीना बहाकर कहते हैं कि मेरा पसीना कुछ तो लेकर आएगा। The Bible says if you're smart enough, if you're wise, stop. While everybody's axing away, you stop and look at your axe, how it is, see what you can do to make it a little sharper, and then go to work. You'll be done before that guy is done. बाइबल कहता है कि अगर तुम बुद्धिमान हो तो सुबह उठकर जो है तुम्हारे कुल्हाड़े को देखकर जो है उसे और पैनी करके काम करोगे तो दूसरे व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होगे और ज्यादा सफलता को पाओगे, अच्छी जीती से रहोगे। So we've read about 5-6 verses 5-6 here. वर्षों को हमने पढ़ा है अभी। Wonderful counsel from God's word. परमेश्वर के वचन से एक अच्छी आलोचना हमें मिली है। Let me say some things based on this. इसके आधार पर मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ। It's talking about work and working hard and working diligently, careful enough to make sure that we do our work with some expertise and skill. हमें हमारे काम के बारे में बताया गया है, कामकाजी होने के बारे में बताया गया है, परिश्रम करने के बारे में बताया गया है, कुछ एक्सपर्ट्स लोगों के साथ काम करने के बारे में हमसे कहा गया है। But let me add something to that. पर इसके साथ कुछ और मैं मिलाता हूँ। Because if we leave it at that, then people are totally dependent only upon their hard work and their skills. ऐसे ही हम छोड़ दें तो लोग जो है पूरी तरह से अपने उस मेहनत पर ही निर्भर रहते All हैं। these are important. ये सब बातें बहुत जरूरी हैं। You got to work. तुम्हें काम करना होगा। You see, work was given by ये God. काम जो है करना होगा क्योंकि परमेश्वर Some का people दिया have the गया है। idea that work is a curse that came as a result of the fall, कुछ लोग सोचते हैं कि ये पाप में गिर जाने के कारण जो ये काम हो रहा है। Man was sitting and eating, and then Adam sinned, and since then we've been working. मनुष्य they think. बैठकर खा रहा था,
आदम के पाप करने के बाद जो है मनुष्य को काम The करके Bible खाना पड़ doesn't रहा teach है। that. बाइबल ऐसा नहीं सिखाता। When God made man, the first thing he did, before he gave him a wife, he gave him work. जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो पत्नी को देने से पहले परमेश्वर ने उसे काम दिया। That's why when you go try to find a wife, they ask you if you got work. इसीलिए जो है पत्नी ढूंढने के लिए जाते हो तो सबसे पहले पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई काम है कि नहीं, Because first things must come first. क्योंकि सबसे पहली चीजें पहले आ जानी Get चाहिए। work first, then get wife next. पहले काम करो फिर उसके बाद If पत्नी you don't पाओ। have work, then don't get a wife. काम नहीं है तो पत्नी भी नहीं है। And some people say, even if he doesn't have work, it's all right, we'll marry. कुछ लोग कहते हैं काम नहीं है तो कोई बात नहीं, शादी कर Two लो। people wanted to get married, and both of them were not working. you दो see. लोग जो शादी करना चाहते थे और दोनों को दोनों काम नहीं कर रहे थे। I said, who's working among the two of you? मैंने पूछा दोनों में से कौन काम कर And रहा the है? boy that, he has never worked and he's not planning on और वो working. लड़का जो कभी काम नहीं करता था और काम करने की योजना भी नहीं कर रहा था। The girl has worked and is very capable. लड़की काम करती थी, बहुत ही क्षमता पाई हुई थी। I thought at least I'll talk some sense into them. I said to the girl, at least you can work so he can eat. मैंने उस लड़की से कहा कम से कम तुम काम कर सकती थी ताकि तुम खा सको। I said, he's not planning on working. Why don't you plan to work? At least then he can have something मैंने to eat. कहा कम से कम वो तो कोई योजना नहीं बना रहा है, तुम योजना कर सकते हो, खाने के लिए कम से कम काम कर Then सकते you हो। consider marriage. फिर उसके बाद शादी के बारे में सोचो। First solve your work problem, then come पहले for marriage. तुम्हारे काम के बारे में जो समस्या है उसे ठीक करो, फिर One of शादी the के बारे में बात relatives करो। was there. He's not a brother or something, some brother-in-law or somebody, He's sitting there and saying, don't worry, we will take care of them. देखिए उनके रिश्तेदार वहाँ बैठे हुए थे, वो कहने लगे चिंता मत करो, हम सब कुछ देख लेंगे सभी लोग दोनों को। Have you heard anything like that? ऐसा कभी तुमने कुछ सुना है? Totally against God's principles. परमेश्वर के सिद्धांतों के पूरे विरुद्ध The है। Bible says, don't trust a man who's got his breath in his nostrils. बाइबल कहता है कि जो अपने नाक के द्वारा श्वास लेता है This man says, we'll take उसकी care. बातों को कभी मत भरोसा Tomorrow, करो। if he's dead, वो कह ले हम देख लें, अगर वो कल मर गया, if the breath leaves his nostrils, where will these people go? उसकी सांस अगर कल रुक जाए तो वो कैसे इनकी See, देखभाल कर पाएगा? people don't read the Bible and listen to what the Bible says, the Bible principles. They just think they're wiser than the Bible, बाइबल को पढ़कर जो है लोग कभी उस पर भरोसा नहीं करते हैं, वे समझते हैं कि बाइबल से भी बुद्धिमान हैं वे लोग। God gave work first and then only wife. परमेश्वर ने पहले काम दिया फिर उसे पत्नी दी। It didn't come with the fall, it came with the creation. वह जो है पाप में गिर जाने के कारण नहीं, बल्कि सृष्टि जब हुई तभी वो आ गया। And when the fall came, work became difficult. और जब पाप में गिरे तो उनका काम बहुत मुश्किल हो गया। It didn't come after fall, it became difficult after the fall. पाप में गिर जाने के द्वारा नहीं आया, बल्कि पाप में गिर जाने के बाद बहुत मुश्किल हो गया। The sweat and the toil is now associated with our work. उनका पसीना और उनका परिश्रम जो है इस काम के साथ मिल गया। But don't believe that that's the way life is. पर कभी मत भरोसा कीजिए कि ऐसा ही काम Don't होगा। believe that life is just toil and life is just work. ऐसा भरोसा मत कीजिए कि तुम्हारा काम जो पसीने और परिश्रम से भरा हुआ Yeah, होगा। don't think that life is just sweating and trying to make some कभी मत bucks. सोचिए कि परिश्रम के साथ जो है तुम एक कुछ फूटी घोड़ियों कमा No, the लोगे। Bible doesn't teach that. नहीं, बाइबल ऐसा नहीं सिखाता है। Consider what the Bible says in Proverbs 10:22. नीति वचन 10वें अध्याय के 22वें वचन में जो कहता है उसे याद The कीजिए। blessing of the Lord maketh rich and adds no sorrow with it. धन यहोवा की आशीष से मिलता है और उसके साथ कोई दुख नहीं बढ़ाता। Now, the diligent work brings wealth, it says. अब कामकाजी काम जो है धनी बनाता But you है, gotta add this with that. पर इसको उसके साथ मिलाना होगा। Because there are some hard workers and there are some workers that work hardly. कुछ परिश्रमी लोग हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काम करते हैं। The ones that work very hard, एक बार जो कड़ी मेहनत करते हैं, if you tell them you work hard, you'll become wealthy. उनसे कहो कि तुम कड़ी मेहनत करो तो और धनी बन जाओगे, There's a big danger in उसमें that बहुत बड़ी if you खतरा है stop with that. अगर तुम उसे रोकोगे। Because some people are so good at working, especially in our country. You got to appreciate the people, Indian people. They're the greatest workers in the world. They'll just go and work 15, 16 hours and sweat and just put their whole spirit, soul and body into it and work, try to देखिए get हमारे better. देश में जो बहुत ही अच्छे लोग हैं जो लगातार काम करते रहते हैं, कोई 15-16 घंटे जो लगातार काम करते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, कहते हैं सिर्फ काम 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 के अलावा कुछ और That's नहीं। why I never preach, just work hard, you'll get wealthy. No. इसीलिए मैं कभी प्रचार नहीं करता सिर्फ काम करो और धनी बन जाओगे।
Because then you'll have a lot of sick people. क्योंकि उसके बाद बहुत सारे बीमार लोग भी होंगे. Then you'll have a lot of people that lost their wives. बहुत सारे लोग जो अपनी पत्नियों को छोड़ Wife चुके walked हैं, out on them. पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई हैं. Because this man doesn't need a wife. He's married to his job. क्योंकि इस व्यक्ति को पत्नी की जरूरत नहीं है, वो अपने नौकरी से शादी कर चुके हैं. You give birth to a lot of problems when you overemphasize just hard work. बहुत सारे लोग जो है कड़ी मेहनत पर जोर लगा के कहने के कारण जो है कड़ी मेहनत पे लगे हुए हैं. That is why the Bible is a very well balanced book. इसलिए बाइबल जो अच्छा बैलेंस किताब है. It tells us work. वो हमसे कहता है कि काम करो. Tells us in fact you must even apply a lot of skills and wisdom in your हमसे work. कहता है कि तुम्हारे काम में जो और निपुण होकर You और must be एडवांस बने रहो. careful to apply everything, all the skills properly. ये सभी क्षमताएं जो है बहुत ही ध्यान से तुम्हें उसमें काम में लगाना होगा. But there is another side to this. पर इसका एक और भाग भी है. That is the blessing of the Lord. वह यहोवा की आशीष है. Not just work, there must be the blessing of the Lord. सिर्फ काम ही नहीं, यहोवा की आशीष भी है. That is what brings the increase in our lives. यही जो हमारी जिंदगी में वृद्धि को लेकर आती है. You see, if you don't believe God and believe in the अगर blessing, आप परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते हो, आशीषों पे भरोसा नहीं करते हो, if there is no faith, अगर कोई विश्वास नहीं है, then all you have is sweat and hard work. फिर तुम्हारे पास सिर्फ पसीना और कड़ी मेहनत है. For a lot of people, I see that that's all they have. They have just sweat and hard work to show, but no faith. बहुत सारे लोगों के पास जो है सिर्फ वही है, वहां पर विश्वास नहीं है, सिर्फ पसीना और कड़ी That is मेहनत why है. I added faith with this diligence and obedience and all of that. इसीलिए जो आज्ञाकारी और कामकाजी इन सबको मैंने मिलाया है उसमें. Because that's very important. क्योंकि वो बहुत जरूरी है. We must diligently work, but at the same time, we must be ready to believe God for an हमें increase. कामकाजी होना चाहिए, पर इसके साथ हमें विश्वास भी करना चाहिए ताकि हम वृद्धि पाएं. Amen. आमीन. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled in your presence. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, you
fullness of joy at your right hand. There are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly, exceedingly